Am I audible to you all? Okay. Hello. Good morning, ma'am. You are audible. Okay. Yes, ma'am, you are audible. Good morning, ma'am. Thank you. Good morning. And now I would like to ask, is my screen share visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is Okay. Great. So let me just allow the people who are joining in the call and we will start it soon. So just a couple of moments. I'll ask from you people. Just hold on for a moment. I request everyone to please keep yourself mute. Okay. So again, I admit these latecomers are going to bother a lot, I'm sure. Anyhow, so I hope you all are doing good. I just want you all to be interactive throughout the session, basically, because it is a mutual understanding one. I mean, I would like to know the track, the direction in which I am going. Are you able to follow that or not? So I will be expecting your inputs. So keep posting, use the chat box. I prefer the chat box. Don't use the mic. At the end, at the question answer time, we will use the mic. But initially, use the chat box and the icons, the emojis which are there. I appreciate if you use that. If you understand anything, you put submit the thumbs up button or any other emojis if you feel like. So, yeah, so today's session, I hope you all are already aware of. So, the first input I want from your side in the chat box is how many of you are appearing for an exam in the near future, within a month or so? Either the chat box or thumbs up if you are having an exam coming soon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, okay, nice. So, we all are here for the preparation of exams. That's so nice to know. Anyhow, and how confident you are for your exams. After this session, I could ask you about your confidence level. I'm not assuring you that you will feel fully confident after this session, but the one assurance is you will get a positive vibe. You will have a feel that yes, we can do it. That I promise. And this session could contribute a few couple of percentage higher in your scores. So that I can commit here if you follow the instructions, if you follow what we are going to do here. Okay, so let's start full-fledgedly. And I know I'll be asking a lot of questions, but those questions are not like the classroom questions. Just to keep it engaging, just to keep you all staying with me, I will be asking questions. My another question is, are you more comfortable in English or you want me to be a mix of Hindi English? We have some international participants also. So if anybody is not comfortable with full English, then let me know. I can keep it to a mix. I'll try. मैम हिंदी मिक्स. हिंदी मिक्स. ओके, चलो थोड़ा हिंदी भी करेंगे, but I believe we have Laseen and any other international. Just I can see Laseen here. So Laseen, you have to cope up with us for a little bit.
I will be speaking Hindi for some time and then I'll be using English as well. Although the slides and everything are in English, so I hope it is fine with you. Chalo. So, yeah, Plasin, you want to say something? Yes, yeah, it's okay for me. You know Hindi or you can understand Yeah. Hindi? Today you will be Yeah. learning Hindi as well. Okay, nice. Okay, thank Chalo. you. ओके ग्रेट ग्रेट चलो अब ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो एग्जाम टाइम पर ही पढ़ाई करते हैं दोज हु प्रिपेयर ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जाम पहले से तो पढ़ना ही नहीं है ऑल ऑफ यू मोस्ट ऑफ यू चलो दैट्स अगेन अ गुड थिंग टू नो कि हमारे सारे लोग वही हैं जिनको लास्ट मोमेंट स्टडी करनी है एंड दिस इज अ हेल्पफुल थिंग बट I am not encouraging the last moment study here being a faculty. It is always better कि आप थोड़ा पहले से start कर दें preparation और एकदम exam time पे तो आपको full fledgedly लगना ही है but थोड़ा पहले से अगर prepare करेंगे तो it is always better. Anyhow, चलो honest answer दिया so I am happy here. अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हमने कुछ आज पढ़ा लेकिन कल हम उसे भूल गए या फिर हमने बहुत अच्छे से आज पढ़ लिया कल एग्जाम है लेकिन एग्जाम के रास्ते में ही हमें लग रहा है कि हम भूल गए इन द व्हाइल गोइंग फॉर योर एग्जाम हमें कुछ याद ही नहीं आता नाइस आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी दैट यू पीपल आर एटलीस्ट ऑनेस्ट हियर चलो so today's session is not about studying harder. This session is about studying smarter. So how we can study smart? Oh, somehow my screen share is gone. So we will be discussing about how to study smart. And I know there are multiple tools, n number of tools available with which you can prepare for your exams. And most of you would be using either Gemini or ChatGPT. क्या करते हैं अपना टॉपिक डालते हैं एंड वॉट एवर द ChatGPT गिव्स यू आप उसी को सच मान के यू गो अहेड विद दैट करते हैं हम लोग ऐसा अब इतनी ऑनेस्टली बात कर रहे तो यस मैम बिल्कुल बट ChatGPT इज लाइक ओके इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ स्टफ एंड हमें ज्यादा इजी टू एक्सेस लगता है या वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है इसलिए हम लोग उसे यूज करते हैं ठीक है बट कोई बता सकता है कि ChatGPT और Gemini के साथ जब हम स्टडी करते हैं when we go for our course material when we discuss about the syllabus topics क्या प्रॉब्लम आता है what problem comes up when we use ChatGPT for generating the study material or the numericals anyone can tell me मैडम ग्रामर और स्टडी और न्यूमेरिकल में एरर रहती है ग्रामर मिस्टेक पूरा बहुत सारा रहता है हाँ उसको चलो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आई गॉट इट उसको क्या बोलते हैं जब वो कुछ गलत देता रहता है कुछ भी देता है उसको हम क्या बोलते हैं हेलुसिनेशन है ना अपने मन मर्जी से कुछ दे देता है जो कि जब हम एग्जाम में लिख के आते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है फिर हम सोचते रह जाते हैं कि हमने तो ChatGPT से पढ़ाई करी थी फिर हमें नंबर कम क्यों आए ये भी होता है अगर हम इतना क्रॉस टेली करें या समझने जाएं एंड न्यूमेरिकल्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट गिव यू द प्रॉपर आंसर्स एंड इट एक्चुअली हेलुसिनेट्स हमारे पास कोई चेंजेस इज द वैल्यू इनटू समवेयर अगर टूल हो जो हेलुसिनेट भी ना करे हमारे नोट्स से ही हमें प्रिपेयर करवा दे हमारे सिलेबस से ही हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से ही हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे क्या कोई ऐसा टूल हो सकता है जो हमें ये सब करके दे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड दिस इज इक्वली वैल्यूएबल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पे बहुत सारे क्विजेस फ्लैश कार्ड्स जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं एंड हाउ डू वी गो फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो वी हैव टू डेवलप सो हाउ डू वी वर्क ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्मार्टली सो
Today's tool is all about that only. Couple of slides and then we will jump into the hands-on part. एक दो subjects के I have already prepared myself and meanwhile हम लोग साथ उस पर काम करते चलेंगे. All good? So अभी कहानी क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हमारा सिलेबस है, हमारे फैकल्टीज हमें नोट्स तो देते ही हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारे पास बुक्स भी हैं जो कि हम कभी कभी रेफर करते हैं, है ना. अब जो हमारा पूरा सिलेबस है, हमारे पास एवरीबडी इज हैविंग देयर एग्जाम सिलेबस. आपके पास होता है नहीं होता सिलेबस? सो व्हेन वी थिंक अबाउट कि ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस के चैप्टर्स के नोट्स हमारे पास हैं, कहीं ना कहीं द फैकल्टीज आर स्टिल वर्किंग फॉर यू पीपल. सो सम फैकल्टीज प्रोवाइड द नोट्स और यू आल्सो मेक योर नोट्स समहाउ. यूट्यूब से देखा, कहीं किया कुछ, एंड आपने अपने जॉट डाउन किए हुए नोट्स होते हैं. अगर वो बहुत लेंथी मटेरियल है, आपके पास ई बुक्स हैं, इफ यू हैव अ पीडीएफ ऑफ बुक्स अवेलेबल और समथिंग लाइक दैट, तो अगर कोई ऐसा मैजिक हो कि वो आपको बुलेट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दे, कुछ ऐसी चीजें दे दें जिससे कि आपका सारा कंटेंट एक साथ इकट्ठा हो जाए और इतना अच्छे से विजुअलाइज हो जाए कि आप एक बार उसे देखें एंड यू विल गेट इट. विजुअलाइजेशन के लिए बोलते ही है ना कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. कि आप इतना, आपको एग्जाम के लिए भी बताते हैं कि आप जितना फ्लो चार्ट्स बना के आएंगे, जितना टेबल्स बना के आएंगे, इट वुड बी मोर beneficial in scoring better in your exams. So that is how this tool will help you. Now I am not creating a suspense, I am just, you know, if I tell you the name of the tool ना, आपका ध्यान इन सारी चीजों में नहीं रहेगा and you would start working on that immediately. I know the generation issue. You don't want to listen, you just want to apply. So we will apply as well, but थोड़ा सा हमें सुनना भी रहेगा. अभी इसमें हमें क्या करना होगा, जो भी सोर्सेज आपके पास हैं, सोर्सेज कुड बी एनीथिंग, पीडीएफ, यूट्यूब लिंक, स्कैन्ड कॉपी, anything you can upload, it will process and then you can do a lot of stuff with that. You can talk to this tool as you are talking to your faculty. आपके जो भी questions हैं, you can directly ask and it will give you. Other than that, it will give you a lot of different stuffs, like आपका PPT भी बना के देगा. It will give you the Google Slides, it will give you the document, anything you can generate from here. And these are the study materials basically. आप उसमें क्या क्या डाल सकते हो जिससे कि वो आप ही के नोट्स से आपको कंटेंट रेडी करके देगा. सो हेलुसिनेशन का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट. देयर इज अ सेइंग, हम बोलते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते. तो आपका कंटेंट जैसा होगा, आपको वैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी. चैट जीपीटी क्या करता है, वो नई नई कहानियां अपने मन से ले आता है, एंड दैट इज रेफर्ड एज हेलुसिनेशन. सो अब हमें अपने नोट्स से बातें करनी है, वैसे जैसे हम अपने फैकल्टीज से भी कभी कभी करते हैं. आजकल थोड़ा कम करते हैं, बट सो यू कैन इंटरैक्ट विद दीज एज वेल. सी, आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू ऑल वुड स्कोर बेटर. दैट इज फॉर एवरी टीचर, दैट is the whole sole motive कि बच्चे अच्छे से स्कोर करें. एंड विद दैट मोटिव व्हाट वी वांट कि आप लोग कहीं से भी पढ़ें बट सही पढ़ें. व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि ऐसा कहीं ना हो कि नंबर्स किसी रीजन से कम हो जाए. सो दैट थिंग वी ऑलवेज प्रेफर दैट स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ. नाउ मूविंग अहेड, these all are things we will be doing quickly. अभी ये कुछ टॉपिक्स हैं. आई एम नॉट श्योर you all are from what background. Everybody is coming from a different background. So with that different background, I cannot come up to a single topic कि हम क्या करें. हम मैनेजमेंट का टॉपिक लें, we'll take something from the commerce, we'll take something from the engineering background. So what I thought of is I'll give you some ideas, and then later on, after learning it, you can start doing it all by yourself. So now just a second, let me admit someone. Okay. Where are we? Okay. So now, there is one more good thing, that is audio podcast. ये होता है ना कि जब हम एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं तो द कम्यूट टाइम, हम बस से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं अबाउट द एग्जाम टॉपिक्स कि यार चल जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं सो दैट वो एग्जाम में ध्यान रहेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि तू इजी लैंग्वेज में समझा दे सो दैट कि हमें लिखते टाइम याद रह जाए. So that
जॉब यू कैन ऑल्सो लीव टू योर AI. आप अपना ऑडियो पॉडकास्ट अपने कोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग बनाएं, उसको सेव करके रख लें, एंड क्या करें उसको लेटर ऑन आप आपके रास्ते में कम्यूट टाइम में आप उसको सुन सकते हैं. एंड दैट कुड बी इन एनी लैंग्वेज ऑफ योर प्रेफरेंस. It could be in Hindi as well, and all the regional languages, Indian regional languages are also there, and of course the international languages are also there. So any language you feel comfortable with, आप उस language में अपना podcast ready कर सकते हैं. Moving ahead, auto summaries. हम लोग summaries पे बहुत rely करते हैं. हमें brief में चाहिए होता है. We just want the bullet things, and we can elaborate. We all are champion in elaboration. अगर हेडिंग करेक्ट है तो उसके अंदर हम सब लिख सकते हैं. सो इट कुड गिव यू दैट ऑल्सो. इट कुड गिव यू द एनालॉगीज ऑल्सो. सिंपल एनालॉगी से अगर समझा दें तो इट वुड बी इजी टू राइट डाउन सिंपल एग्जाम्पल्स. इफ इट कुड गिव दैट वुड यू इजीली मेंशन इन योर एग्जाम्स. क्विज एंड फ्लैश कार्ड्स. अपना नॉलेज कैसे चेक करेंगे? सब कुछ अच्छे से कर लिया, लेकिन क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमें याद हो गया या हम समझ गए? So for that thing, we have quiz and flashcard thing also. We always have to make sure that what we are learning, are we actually getting it? So it would help you do the self introspection basically. Introspection could be the correct word, or there is no judgment in that. The introspection thing is, हमें सिर्फ हमारा ही पता होगा. नो वन विल बी देयर टू लाफ एट यू कि अरे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना भी नहीं आया. सो दिस थिंग इज फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इंट्रोस्पेक्शन. वी आर एक्चुअली गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स. सो दीस क्विजेस एंड फ्लैश कार्ड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प. नाउ द स्ट्रैटेजी. पहले स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे. अभी एग्जाम में कितना टाइम है? एवरीबडी, आई एम नॉट श्योर. यू ऑल आर गिविंग डिफरेंट एग्जाम्स. तो 7 days बिफोर, एटलीस्ट अगर आपके एग्जाम में 7 days हैं, सो 7 days बिफोर आपको क्या काम करना है? नोट्स अपलोड करने हैं. नोट्स को सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखना है. आपके जो फैकल्टी स्लाइड्स देते हैं, प्रेजेंटेशंस, आपका PDFs, न्यूमेरिकल्स जो बुक में होते हैं, कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं बुक्स के, वो स्कैन किए, रेडी किए सॉफ्ट कॉपी में, एंड डिवाइड द वर्क. टीम वर्क इज ऑलवेज हेल्पफुल. एक सब्जेक्ट मैंने कर लिया, एक सब्जेक्ट मेरे फ्रेंड ने कर लिया, एक सब्जेक्ट उसके फ्रेंड ने कर लिया. दैट इज हाउ ऑल सब्जेक्ट्स वुड बी कवर्ड. सो एटलीस्ट आपका जो वर्कलोड है वो कम होगा. सारे लोग मिलकर एक एक सब्जेक्ट को रेडी कर सकते हैं. सॉफ्ट कॉपी में रेडी कर लो, या फिर उससे रिलेटेड आप कोई वीडियो है, यूट्यूब वीडियोस है, या जो भी कंटेंट है. कई बार क्या होता है, हमने यूट्यूब वीडियो एक बार तो देख लिया, बहुत सारा टाइम देख के देख लिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई न्यूमेरिकल समझ लिया, लेकिन बाद में फिर से उसे देखना पड़ता है. तो उसको जस्ट बुकमार्क करके रख लो. So make your stuff ready at least 7 days before. आप लोग क्विक जनरेशन है तो शायद आप थोड़े कम टाइम में भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 7 days बिफोर ये काम आपको कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट कंटेंट आपका एक साथ रेडी हो जाए. और अब उस कंटेंट से आपको क्या क्या बनवाना है अपलोड करेंगे, एंड पॉडकास्ट बन जाएगा, आपका PPT बन जाएगा. आपको बेटर PPT अगर चाहिए, आपको लग रहा है कि ये सारा बहुत सारा है, आपको शॉर्ट में चाहिए, वो हो जाएगा. इन्फोग्राफिक्स में आपको विजुअलाइजेशंस मिलते हैं, लॉट ऑफ स्टफ यू कैन गेट फ्रॉम देयर. तो अब क्या करेंगे? 3 to 5 days हो गए. अब हमें अपना प्रिपरेशन जो है वो रिवाइज करना है. वी कैन टेक द क्विजेस टू चेक आवर ओन नॉलेज, एंड उसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानियां हैं वो आप लास्ट 1 to 2 days के लिए रेडी रखेंगे. एंड नाइट बिफोर सिर्फ आपको आपका समरी का रिकैप ऑफ समरी काइंड ऑफ आपको इवैल्यूएट करनी है, एंड रीड आउट करना है, एंड आपके कम्यूट टाइम के लिए आपको पॉडकास्ट रेडी रखना है, सो दैट व्हाइल गोइंग टू योर एग्जाम हॉल you can easily listen to it and then you can understand it. चलिए, moving ahead. अब BBA, BCom, MBA और भी कोई स्टूडेंट्स अगर यहाँ हैं तो अकॉर्डिंगली यू कैन कम अप विथ योर टिप्स कि हमें क्या करना है. किसको फ्लैश कार्ड्स लग रहे हैं, किसको MCQs आते हैं एग्जाम में, किसको केस स्टडीज आती हैं, who all have to solve the numericals in the examination. So accordingly, her subject-wise strategy would be different. Course-wise as well as subject-wise, the things would vary. So we have to be careful accordingly. See how we will be doing it now. So we will be now starting
And the tool, you guys might be wondering what that tool is. Can anyone by so far would have guessed the name? कि किस tool की हम बात कर रहे हैं? It is visible in the screen itself. So the name is Notebook LM. Notebook LM पे कैसे जाना है? Simple, आप अपने Gmail पर जाएंगे and वहाँ से we will go into it. I'll stop sharing my screen and let's do the practical part. Are you all ready? I'm stopping the PPT screen and I'll be jumping to the Gmail. Okay, nice. Is there anything in the chat box? Okay. So I request you all to just watch it carefully and then we can implement. Don't indulge in implementation as of now because first understand it and then follow it. And let me know if my change of screen and everything is visible. So we have to go from here, scroll down and go to Notebook LM. Now, is it visible to you all? I went to my Gmail and then I went to the Notebook LM. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. The scroll and everything is visible to you all? Ma'am, your Gmail interface is there. LM interface is not there. I understood the problem. Just a second. By the time you all guys just open the Notebook LM. I'm joining from my personal Gmail account. I guess because of this, it is not working. Yeah. Is it visible now? Yes, ma'am. Yeah. Nice. So what I have done is I have already created few notebooks here. If you can see, this statistical quality control is in the operations management, then fundamentals of production and operations management. Then we have this analytics, data science things. Few of my kids' stuff is also here. He is studying his 6th standard stuff also from Notebook LM. So Hindi grammar, the most difficult part, is also visible here. Then, so I've already done few things: descriptive analytics, then entrepreneurship. आप लोगों में से कोई सब लोगों के सब्जेक्ट में हो सकता है BBA, BCom as well. Then this is the social science study of 6th standard, English grammar. So lot of variety of stuff which I have already done here. But to start with, I will pick this one, statistical quality control, just to explain you people. But I would start with this first. I have already created few things for your understanding, and one by one we will take everything here.
what I have done is I have uploaded. You can go into add source. First thing is create. Click on add web, any YouTube video, any link, any stuff which is available over the internet that you can now upload files. So you can upload your PDFs and a Word document and anything from your system. Then here also you can paste your URLs from your drive if you have anything, or simple copy paste of text also you can do. So these all are the options which we discussed in preparation 7 days before. तो आपको यहाँ से सारी चीजें अपलोड करनी है, because it takes time, a little bit of and buffering चलता रहता है. It's not like that. It is quick, but हाँ, अब थोड़ा सा पहले से चीजें रेडी रखेंगे तो it would be always better. So जब हम okay, but my screen change is not. No, ma'am, your screen is not moving. Okay. I will go to the other screen. Is this screen visible? Yes, ma'am. This one is missing. Yes, ma'am. Okay. So Yes. here you have Visible. options of create notebook. You can click over there. Once you click over there, this thing comes up and you have add source option. When you click on add source, now I'm not sure when I click what would appear here, but I hope you all can understand this thing. आपने add source करोगे तो you have lot of options available जिसमें आप PDF डाल सकते हो, any YouTube URL or any text जो कि आपने copy किया है that you can paste over here. In that way आपका ये एटलीस्ट वो जो हम 7 days बिफोर वाली बात कर रहे थे तो सारा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा. नाउ व्हेन वी लुक एट द राइट हैंड साइड, हमारे पास है ऑडियो, स्लाइड डेक, वीडियो, माइंड मैप्स, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक्स एंड डेटा टेबल, एंड दे ऑल आर वंडरफुल. ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूटिलिटी. जब हम ऑडियो की बात करते हैं तो मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑप्शंस आर देयर विद अस. We can go into any language and we can create. अब इसमें भी we have multiple options. Deep dive, आपको बहुत डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को समझना है, go into the deep dive. आपको बिल्कुल ब्रीफ में चाहिए, quickly, तो you can go into this. Critic, आपको expert review आपके सारे कॉन्सेप्ट का एक other perspective से you can get it. And debate is like you will be listening to two people debating about the topic or discussing about a particular topic which you have chosen. ये आपके टॉपिक से हटके बात नहीं करेगा, आपके मटेरियल से हटके बात नहीं करेगा. इट विल यूज दैट एज अ बेस एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स. लैंग्वेज चोजन में ये वाला स्क्रीन विजिबल है क्या जिसमें लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. सो यू कैन सी वी हैव लॉट ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल एंड आप लोगों के लिए आई हैव क्रिएटेड अ हिंदी पॉडकास्ट आल्सो. सो सी we have this lot of languages like Marathi and Nepali, Konkani, Hindi, all these Gujarati, these languages are, we have like Indian regional languages are also there. तो आप जिसमें भी comfortable हैं, कई बार लगता है ना अपनी language में कोई चीज सुन लो तो ज्यादा याद रहता है. So that option we already have. Okay, now I would like you to listen to the Hindi podcast. I'm not sure कि इसका sound आप लोगों को जाएगा या नहीं, but we can try. यानी इनपुट्स को तैयार सामान या सेवाओं में बदलना, जिसे हम आउटपुट्स कहते हैं. सामान आप छू सकते हैं और सेवाएं तो तुरंत इस्तेमाल हो जाती हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेफ रसोई में कच्चा माल को मिलाकर यार. खैर, दूसरा पॉइंट, अब जब प्रोडक्शन चालू हो गया है तो हमें मापना होगा कि हम इसमें कितने स्मार्ट हैं, जिसे हम प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहते हैं. पर क्या इसका मतलब सिर्फ धड़ाधड़ ज्यादा चीजें बनाना है? बिल्कुल नहीं यार. असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम से कम रिसोर्सेज और समय का इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट देना. मजा आ रहा है. और अंत में इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपनियों को असेंबल टू ऑर्डर जैसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी चुननी पड़ती है. अभी हो गया हमारा ऑडियो. नाउ वी हैव अदर थिंग्स आल्सो. ये डीप डाइव इंग्लिश में भी है. इफ इट इज ऑडिबल वी कैन.
labor that are all coordinating in real time. But if you actually rip the roof off that entire global process and look at the floor plan of how modern life is built, the magic vanishes. But something much more fascinating takes its place. You're looking at a beautifully choreographed machine. And that is our mission today. Is this English We're taking one a massive audible? stack of research, academic materials, and case studies on production and operations management. And we are unpacking Yes, the ma'am. hidden machinery So, behind moving ahead. everything you buy, consume, and I basically like the infographic as well as I like this mind map concept. Is this mind map visible? Yeah. So यही तो हमें चाहिए होता है जो हमारे अदर्स टाइप ऑफ बुक्स हैं गाइड काइंड ऑफ जो हम रेफर करते हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन क्यों क्योंकि वो हमें एट ए ग्लांस मेन हेडिंग्स दे देता है सो अब नाउ दे हैव टू यू हैव टू मूव अहेड ऑफ दैट क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द जेन्युइन कंटेंट सो दिस इज हाउ now production may be goods and services, operations management, you have transformation, value creation, all those ये theory है basically. We will talk about the practical stuff as well. So I believe you would have an idea कि how these mind maps work. Okay, now we will go into the infographic. Is this infographic visible? Infographic में भी ठीक है this one I've already created for you people but हर किसी का अपना interest होता है so when you go into infographic आपको बहुत सारे options मिलेंगे कि you want it in the form of a sketch, you want it in anime form, you want it in the clay form or the Legos are also here, right? So whatever suits you, whatever you feel more comfortable with, वो style का आप infographic बनवा सकते हैं. Now comes, we have covered these things. Now, let me go into some other topic which I have done for you people. Still people are joining. The next session onwards, we will not allow the latecomers. These latecomers spoil the entire session. So, what I've done today only is I took some exam question papers and I did a chat with the Notebook LM. And it did wonders basically. What it did is it gave me the question paper from a particular chapter which came in the university exams and certainly the important questions as well. So now you can see I have uploaded a chapter control chart numericals and I have uploaded the PDF as well. I uploaded the last 5-year question paper links. I didn't, it's not like that you have to scan and do all these things. It is, the question papers are available at the DAVV website. And similarly, जो other universities हैं, उनकी website पर भी आपको easily previous year question papers तो मिल ही जाते हैं. So that compilation would actually help you. So control chart practice questions, control chart document, if you have any material in any form like PDF or Word document, or these are basically the links. So MBA second semester 4-year question papers I have mentioned over here and this is the syllabus. So I have mentioned the syllabus as well and then the unit 7 notes which I used to share with my students. Now what I did is I asked them that simple like आप जो ChatGPT से बात करते हो or you can talk to Notebook LM as well. Give me the questions which came theory questions as well as the practical question from unit 7. So specifically September 22 को जब exam था उसमें short note आया था TQM quality circles. November 23 के exam में we got a question from Six Sigma and in October 24 we got a question from TQM. So
It signifies that कि short notes आते हैं TQM quality circle 6 sigma पर, and now we know what we have to do here. So ये theory questions हो गए. अब अगर हम scroll up करेंगे, for the practical questions are also there. Scrolling. So see, now the numerical questions. Question 7, it came on the P chart. Then in 24, question number 6 specifically, it came on R chart, X bar chart and R chart. So this is how the exact question you can get at your fingertips. And this is where the magic begins. This is how you people can actually work on preparation. ठीक है, कंटेंट है, एवरीथिंग इज देयर विद अस, बट हमें ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ शुरू करें एंड हाउ वी विल वर्क ऑन इट. सो दिस इज हाउ यू कैन compile your course material and you can work on it. Moving ahead, there are a lot of stuff which you can use, you can practice. यहाँ पे हमने slide deck option I've already told you, audio I've told you, video also. कि if you want कि एक explainer video बन जाए, so cinematic भी बन सकता है, brief भी बन सकता है, bite sized, and somebody that can explain you in simple words. So आपको क्या चाहिए that you have to mention, and you can generate the video as well. Then comes the flashcard and quizzes. So quizzes will come you with the questions and it will give you the answers as well. And the data table, consolidated table that will give you the stuff. So I've generated flashcard for another topic. And any particular topic which you people want, so I can work on that as well. Doctor, we don't see your screen. Yeah, I just stopped sharing. I'm Okay. moving into another topic. I'm moving to another topic because I have created flashcard, quiz, and video for another topic. That's why. I just want that everybody could get involved in that. That's why I'm using different topics. So we came to analytics. There, I've created a cinematic video, I've created quiz. So that would help you evaluate yourself, like how well is your preparation and where exactly you are lacking. So coming into this. So here I've just used one PDF of my course material. Raw, unordered arrays of data are entirely opaque to human cognition. Without a framework to process it, a data set is... I'm sorry. Is it Raw, unordered arrays of data are entirely opaque to human cognition. Without a framework to process it, a data set is a storm of alphanumeric noise. Descriptive analytics is a systematic process of extracting structure, shape, and relationships from that chaos. It relies on a combination of rigorous organization and statistical summarization to make the data readable. The foundational unit of this entire architecture is the variable. A variable is simply a named unit of data that is assigned a exam. You don't need to worry कि you have the proper internet available or not. So last moment hassles के लिए आप इसको download भी करके रख सकते हैं. Now the quiz. Everything you create here is downloadable. You can create a folder. Now you have a question and you can choose an answer. Any answer, you can get a hint as well. And so I'm not reading the question, I'm just selecting it. So if it is wrong, it is giving me the correct answer. Why this is correct, that explanation is also there. Another question, if you do like this, if it is correct, fine. If it is not correct, it will explain you. So this is how you can work on the quiz thing as well. Is the quiz thing clear?
क्विज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाउ वी कैन क्रिएट द क्विज? डेटा टेबल, अब डेटा टेबल हमारा बच रहा है, सो दिस इज द डेटा टेबल। अब जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था उसको एक टैबुलर फॉर्म में अगर हमें चाहिए है, दिस इज हाउ जो हमारे थ्योरी एग्जाम्स होते हैं जहां पे हम अगर इस तरह का कोई एट ए ग्लांस में सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ऐसा कोई टेबल बना के आते हैं, तो हमारा एग्जाम स्कोर या जो हमारी कॉपी इवैल्यूएट होती है, इट हेल्प्स अस स्कोर बेटर। तो ऐसा आपको कंसोलिडेटेड व्यू अगर चाहिए है तो दैट थिंग इज आल्सो देयर। आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, आप इसको सेव करके रख सकते हैं फॉर योर क्विक रिविजन, फॉर योर क्विक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दिस इज हाउ दिस डेटा टेबल इज आल्सो अ helpful part here in notebook. स्टडी मटेरियल मिला, इंटरनेट से मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आपको लगता है कि एक फिर भी यू वांट इट इन अ सिंगल रिपोर्ट, एक प्रॉपर तरीके से आपको चाहिए अपनी ऑन रिपोर्ट, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन क्रिएट योर रिपोर्ट, आप ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, स्टडी गाइड बनवा सकते हो, ब्लॉग बनवा सकते हो, एंड दैट यू कैन ऑल्सो रेफर एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स. So there are some suggested formats also. Now the thing is, it's all about what you want. आपको क्या चाहिए है, that you have to decide and easily you will get it. So I hope I am able to explain the utility and important. And this is one tool. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकेला यही tool है. There are n number of tools available, but yes, अगर हम सारे tools में जाएंगे तो ultimately हम कुछ कर नहीं पाएंगे. So for one session, I think हमारे लिए enough है कि हम एक tool को ही अच्छे से समझ लें, and I'm sure अगर आप ये use करेंगे, it would be helpful to you. अभी from my side, I have covered most of the stuff. I would like to know from your end. आप लोग अगर live कुछ, if anybody can share over here, and you want me to generate something, so we can do in this session itself, because you know I have created these things to explain you, but the topics are something which I am familiar with. अब जो topic में I am not familiar, like there are, I've created few things like project management, finance topics in which I am not familiar, but yes, looking at the infographic, looking at the stuff, I can easily. If you want to go into more simple way, I can explain you how my kid has developed the stuff. So going back, which one? This grassroots democracy is also something of social science topic है बच्चों का, but I'm not sure आप लोगों को कितने को काम का है. But this thing is also nice. इसका जो infographics and जो information हमें consolidated मिल रहा है, I've just uploaded the chapter 11 PDF. जो book का PDF है, I've just scanned the PDF and I've created it in that way. I can show you. So how the complex concepts could be simplified, that is basically we are trying to learn over here. So this is how the Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat levels are explained. This is how their core principles and impacts are covered. Is this visible? Yes. Yeah. Okay. So for a school-going kid to a college, postgraduate level or competitive exam participant, for everyone it has something. These infographics are very nice to cover the things in the bullets. अगर हमें ये main headings किसी भी question के पता है, so we can easily come up with the explanation. But अगर यही नहीं पता है, तो we wouldn't be able to explain the concept properly. So this is how these infographics and mind maps are helpful for us. ये mind map भी पूरा as it is download हो सकता है. आप इसको use करके आपके questions prepare कर सकते हैं, and for theory questions as well as for the numerical stuff also. The formulas could also be covered. It depends. It all depends on your notes. It all depends on your data, your course material, your syllabus.
it will take the stuff from there only, जो आपका जैसा input आपने रखा है यहाँ पर. So quiz and infographics and flashcards. So flashcard will help you understand आपने जितना भी पढ़ा, are you on the right track or not? Okay. Now, anyone has anything to discuss here? Anything who, and there will be a feedback form as well. So there is a feedback form in the chat box. I would appreciate if you people fill it and submit it after this session. Just copy it down, otherwise you will miss the URL. So, meanwhile, now I'm if you want, I can stop presenting. And now the house is open for questions. Yeah, Lasim, please go ahead. Okay, thank you, doctor. Thank you so much. I have two questions. It's notebook LM is free to use all data analysis. Yes, absolutely, absolutely. I might have missed to say that it is completely free, and so far there is no premium version as well. So whatever is there is premium. Okay, okay. It works with a Gmail account. If you have a Gmail account, you can use it. Okay. And I have another question. If you use a notebook LM for a GIS mapping for that, it is possible again to improve your map and data analysis. I don't know if you understand my question. Yeah, I understood, but I have a question. Like, which type of maps you are talking about? You're Okay. talking to the geological or that those maps on which you study. Am I right? Okay. Okay. No. I'm asking you, Lasim. Okay. What type of maps you are asking? Yeah, hydrological or geomorphological mapping for that an example. So It's what you want to possible if generate? you have. Yeah, if you have a data to mapping in, if you ask notebook LM, I will ask you to give a map for that. For example, in Mali, if I will use a region, what's a sub-region, it's possible you can make this in notebook LM. I never thought of this thing, but it's a good, thought. Okay. You can try it, Lasim. If it depends on the geological URL which you have shared and the options what we have. So, I mean, I've never done this, honestly speaking. What I have done is about the course material and exam preparation. Okay. But yeah, this is for everyone. I mean, it is not sticking to the exam preparation only. You can try it. Yeah, I think Okay, noted. it's possible, Yeah, but yeah, noted. we need to try it. Thank you so much, doctor. Okay. Anyone else? Ma'am, I have a question. Yeah, please. Thank you, ma'am, for such an insightful session. I have used LM earlier as well. So I had a couple of difficulties. I want your guidance regarding that. Okay, please. When we used to add data from our side, that is okay, but sometimes we don't have that much data. So we ask LM itself to add sources. We type whatever source we required and it searches the source. Then whatever we think good, we add that source, right, for our analysis plan. But it was causing the same problem as general AI tools cause. It can take data from any of the source. Any and wrong information, and then ultimately you will. So the best option is, that is what I said, the 7 days before strategy. Filter out your material, get it ready. आप अगर YouTube videos भी, there are n number of videos and सारे आपके काम के नहीं होते हैं. So look for a video where आपके purpose वाला information है, correct information है. Because if you leave it to the entire internet, there could be multiple stuff और कई चीजें गलत भी होंगी जो कि ultimately आपको फिर it will give you wrong results. So just figure out that you are uploading the correct material, correct resources, correct references. उतना effort हमें लगाना पड़ेगा just to make sure कि आपको जो result है वो भी अच्छा मिले.
Ma'am, regarding my work, I found a solution. Like I used to tell whenever I asked for source, I used to tell the name of the government agencies or the websites from where it can put up the source. So it was taking source from that websites or from that agencies only, from the government departments only. ठीक है. So regarding DAVV exam, I want to ask like if there are some credible sources or channels which we can give in our command, so it will take data from that things only, because I don't know whatever the sources for DAVV exams. I got your point. Let me share my screen. Actually, abhi jab when I was working for you people only, I visited DAVV website. Okay, and from DAVV website, I grabbed your exam questions. Okay, अब उसमें भी problem क्या हुआ? Initially, what I did is I mentioned the URL. I mentioned the URL of exam question papers, and it has all the question papers. But Yes, ma'am. then when I asked it कि filter out the question papers from a particular year, so it gave up actually. What it said is कि आप exactly मुझे वो document दे दो, so I will be in a better position. I mean that was what the response I got. So यहाँ पे जैसे सारे subjects, आप DAVV is an authentic site. आप DAVV का एग्जाम क्वेश्चन पेपर का URL डालेंगे, इट वुड बी परफेक्टली ऑलराइट. बट उसमें भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जाकर क्लिक करना है, एंड वो जो आपको अपलोडेड PDF मिल रहा है, उस PDF का URL आप जब डालोगे, दैट वुड गिव यू अ बेटर ऑप्शन. You want a demo of that? I'll show you just. Got it, ma'am. Got it. हाँ, मतलब देयर इज अ डिफरेंस कि आपने सिंपल एंटायर DAVV क्वेश्चन पेपर URL डाल दिया, तो इट विल गिव यू आंसर, बट वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, वो उतना प्रॉपर नहीं होगा. अगर आपको प्रॉपर चाहिए है तो आपको एग्जैक्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट के 2024 का PDF आपको उसको URL देना रहेगा. लेट मी शो यू. बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली देयर, सो इट वाज इजी टू डेमोन्स्ट्रेट. अभी आपको visible है. I'm scrolling it down. Initially what I did is, now can you see the difference? What I did here is davv.com, and it is also not DAVV. ये DAVV के ऑपरेशन मैनेजमेंट के का ही लिंक था जिसमें आ रहे थे पेपर, but it didn't give me a proper answer. It is asking me, for that. ये एग्जैक्ट ये जब PDF का लिंक दिया, I didn't uploaded the PDF, I didn't saved the PDF at my system. I just gave you that PDF link, and then I got this answer. Otherwise, what it was doing is initially it is not giving me good answers. And then when I uploaded the exact sources, so exact question numbers ke saath everything I got it. So this is the feedback note links. So when I gave it, it exactly gave me the full questions. Is it clear now? Yes, ma'am. Ma'am, are there any credible sources for study material? Like if we are telling LM to find source our answers from that sources only to prepare for the exam. Credible sources are basically the books, from proper authors, proper books you need to refer. Those are the most credible. Otherwise, if you go into the internet, you will get a variety of stuff. So credibility to फिर individually check करनी होती है. So I cannot comment on that. But yes, जो proper authors books जो library में available होते हैं, those are the most credible ones. Okay, thank you so much, ma'am. And ma'am, regarding the lessons question, what he was asking for the geological mapping, I don't think LM can generate maps or geological, like which have coordinates. That things it cannot perform. For that, we still we need to use QGIS and other softwares are used. He is asking, he is having the geological maps. If he use those maps as an input, then
जो सारी चीजें हैं, if he could generate any of those, based on the location, what location is there in it, and that something those he may be Okay, further asking. analysis But yeah, of maps. Okay. yes, further analysis of maps we can do through Notebook LM. So this is another dimension where we need to explore, and then only we can say anything. So this is not the objective of this session. Basically, we were into exam preparation only. Next time, maybe we'll look for the other options where we can use this. Right, ma'am. Thank you so much. Okay, nice. Anyone else has any more questions? And the feedback form, guys, are you filling it? And you can use the chat box also. Any suggestions for the next session? Any areas of improvement which you want? Actually, this session is hosted from Govindaram Saxena Institute of Management and Research, and that is based at Indore. And we are a MBA college. We are based at Indore, and our objective is to help the students prepare better. They pass their exams with flying colors. But in that, this is a small initiative from our side. So I hope you all have enjoyed this session. And if there is any specific feedback, any comments, do let me know. I'll be glad to know that. Can we have a group photograph? If you people can switch on your cameras, just for a memory. For the sake of for our records that we all were together. And by the time, please copy the URL or feedback form, and so everyone smile. Okay, thank you so much. Thank you so much. See you all again. Thank you, ma'am, for this wonderful session. Thank you. मैडम IMP का प्रॉम्प्ट मिलेगा क्या कि जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए पेपर में? Yes, of course, you can get it. तो आप बता सकते हो मैडम कैसे मिलेगा? You joined the session very late. We have already covered all these things. Now we'll share the recordings. You can watch the recordings. ठीक है मैडम, थैंक यू. So guys, let's wind up. Thank you so much for joining. And I hope when you give your exams, you will remember me. Thank you.